ठीक है यार, किसी और के लिए ऑन करना है? ठीक है, थैंक यू बासिम। थैंक यू रूला भाई। वी आर नॉट डूइंग पोटेंशियोमीटर, वो तो अभी कर भी नहीं सकते ना, पहले किरचॉफ लॉस करेंगे। पोटेंशियोमीटर तो किरचॉफ लॉस के बाद आता है ना। ऑल राइट यार, सो बेटा लास्ट वाली क्लास में वी स्टॉप्ड एट दिस वर्किंग नाउ कि हाउ टू कैलकुलेट एफिशिएंसी इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। सब यार आज वाली क्लास में जो आगे की थ्योरी करनी है, सो दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यार पहली चीज जो आज डिस्कस करनी है ना, दिस इज अ कंपैरिजन बिटवीन a variable resistor circuit and a potential divider circuit. So दोनों सर्किट्स के अंदर सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है ना, वो डिस्कस कर लेते हैं। So if I construct the diagram, I'll start with the variable resistor circuit first. कैलकुलेशन भी साथ साथ कर लेंगे, तो पहले आप डायग्राम देख लेना। तो लेट्स सपोज इफ a variable resistor is given to you, मैं इसकी रेंज अज्यूम कर लेता हूँ फ्रॉम 0 ohms गोइंग ऑल द वे अप टू 18 ohms. लेट्स ऑल्सो अज्यूम कि इसके साथ मेरे पास एक बल्ब है and the resistance of the bulb is given to us as 6 ohms and the circuit is completed. So the power supply for the circuit is given as 12 volts. Numbers जरा याद रख लेना हो सके तो. So in this circuit, if I would ask you calculate minimum current through the bulb. So can you realize current की minimum value के लिए आपको variable resistor को अपनी maximum setting पे रखना पड़ेगा. So you can work out the current as follows. Voltage is 12. For minimum current, you must set the variable resistor at its maximum value of 18. ठीक है, मैंने 18 को अंडरलाइन किया हुआ है, प्लस 6. तो यार वर्कआउट कर लीजिएगा, करंट का रिजल्ट आपका 0.5 एम्पेयर्स आ रहा है. लाइकवाइज इफ यू आर आस्क्ड इन द सेम सिनेरियो टू कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट इन द बल्ब, तो ये भी आई बिलीव आप फिगर आउट कर लोगे. So for maximum current, you will have to set your variable resistor at its least value, which is 0. मैंने अंडरलाइन कर दिया है. So the working will be 12 divided by 0 plus 6. And the maximum current turns out to be 2 amperes. So if I ask you कि आप इसकी रेंज कैसे लिखोगे करंट की, so I'm sure you would agree कि आपका जो करंट आ रहा है ना, उसकी रेंज को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि the maximum current that can be obtained is 2 and the least amount of current that I can get is 0.5. Just keep this range into consideration, ये आगे मुझे चाहिए हो. Now, if I were to ask you कि इसके अगेंस्ट एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाते हैं, तो हाउ डज अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट लुक्स लाइक, और फिर दोनों को कंपेयर कर लेते हैं. तो फॉर अ पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट, दिस इज हाउ द डायग्राम वुड लुक लाइक. So again you have a resistor. Now this is a fixed resistor.
It could be of any value. तो मैंने इसलिए कोई नंबर नहीं लिखा. The battery is of the same value as before. अब दोनों डायग्राम्स को जरा टॉप वाले को और बॉटम वाले को कंपेयर करते जाइएगा. सो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में ये होता है कि इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग द बल्ब इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन, वी एंड अप placing the same bulb but in a parallel combination like this. And the other end, जहाँ पे मैंने arrow बनाया हुआ है, this arrow is referred to as the sliding contact. So the sliding contact can be placed anywhere on the resistor. So मैं resistor की दोनों extreme ends को label कर देता हूँ as A and B. And now if I ask you, first part, calculate the current in the bulb. बिल्कुल similar question पूछ रहा हूँ. When sliding contact is placed at B. अगर आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी पे पोजीशन करोगे ना, और आप चाहते हैं तो मैं बना के दिखा भी देता हूँ, लेकिन फिर बाद में इरेज कर दूंगा. So if you place the sliding contact at the point B, can you notice at this moment the bulb will get the entire 12 volts because in parallel the voltage remains the same. So when the sliding contact is positioned at the point B, the battery is providing 12 volts. So the bulb will also get the entire 12 volts. In order to find out the current in the bulb, I'll do the working. पहले मैं statement लिख लूं. Bulb gets 12 volts. Its resistance is given as 6 ohms. The value of the current in this case automatically turns out to be 2 amperes. This answer is pretty much similar to the answer obtained in the previous part as well. However, let me change the diagram now. तो मैंने डायग्राम को ओरिजिनल वाला वापस बना दिया. सेकेंड पार्ट के अंदर if the question says calculate the current in the bulb when the sliding contact is placed at A. So इसके अंदर you need to recognize कि जब आप स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट करते हुए बी से ए की तरफ लेके जाएंगे ना, तो बल्ब को मिलने वाला वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा. और जब आप ए पे चले जाओगे ना, तो आपका वोल्टेज रिड्यूस करता करता बिल्कुल जीरो हो जाएगा. सो बी पर द बल्ब विल गेट मैक्सिमम वोल्टेज, दैट इज 12, एंड एज द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मूव्स slowly towards A, the voltage across the bulb continues to reduce until it becomes 0 volts as soon as you reach the point A. So A के लिए अगर आपको current calculate करना हो in the bulb, so then your working should be as follows. पहले मैं statement लिख रहा हूँ. Bulb gets 0 volts at A. Its resistance is the same. There is no point in calculating the current, but nonetheless I'll do the working and I end up getting this answer. If I now ask you, अच्छा मैं डायग्राम को दोबारा चेंज करके स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बीच में बना देता हूं ताकि आपको याद रहे कि the position of the sliding contact can be changed from one end to the other end. तो B के ऊपर the bulb gets the entire voltage of 12
And when the sliding contact is shifted slowly towards A, the voltage continues to decrease until it eventually becomes zero. So if I now ask you, based on these two answers, write down the answer for the range of current. So आपका ये रिजल्ट बन जाएगा कि potential divider circuit के अंदर current varies in this range. Now if I ask you to make a comparison between this answer and the previous answer, थोड़ा सा zoom out करता हूँ ताकि आपको previous वाला answer भी नजर आ जाए. So can you all recognize कि by principle both circuits serve roughly the same purpose, and the purpose is that the variable resistor circuit and the potential divider circuit can both be used to adjust the brightness of the bulb. However, numbers को compare करेंगे तो आपके पास numbers को compare करेंगे तो you should be able to recognize that a potential divider circuit gives you a much larger range of operation because current varies between 0 and 2 amperes. Whereas in the variable resistor circuit, it gives you a slightly smaller range of operation because the current only varies from 0.5 up to 2 amperes. ठीक है, तो पहले मैं ये स्टेटमेंट लिख लूं, फिर मैं रूहुल्लाह को आंसर दे देता हूं. तो नोट करके नीचे लिख रहा हूं. Both circuits can be used to adjust the brightness of the bulb. However, a potential divider circuit provides a wider range of current. That is, आप बल्ब को ऑफ भी कर सकते हो when the current is zero. आप बल्ब को डिम भी कर सकते हो और आप बल्ब को ब्राइट भी कर सकते हो because the current varies all the way from 0 to its maximum value. Unlike in the variable resistor, चेक कीजिएगा, वेरिएबल रेजिस्टर के अंदर आप बल्ब को ब्राइट तो कर सकते हो, आप बल्ब को डिम भी कर सकते हो, बट ऑफ वाला स्टेटस नहीं आ रहा है. So we always prefer using a potential divider circuit because it gives us a larger range of operation in terms of the current. ठीक है. Now मोहम्मद हुसैन ने भी एक चीज पूछी है और हानिया ने भी एक चीज पूछी है. सबने एक ही क्वेश्चन पूछा है. आई एम सरप्राइज्ड ये क्वेश्चन क्यों पूछा है. मैं बना के दिखाता हूँ. ए पे why will it get zero? मैं सेपरेटली बना के दिखाता हूँ. ठीक है. Forget about A. If I ask you, why was the bulb getting 12 volts in this case? So can anybody give me the reason for why was the bulb getting 12? Let's start with this point first. फिर आपको zero खुद ही समझ में आ जाएगा. 12 का रीजन देगा कोई? नहीं नहीं, मैं नहीं हंस रहा. मैं अब हंसना शुरू हुआ हूँ. When I read your comment. हाँ. So can anybody suggest why would the bulb give us 12? इसका रीजन. फिर मैं जीरो समझाता हूँ कि जीरो कैसे आएगा. So any suggestion why are we getting
12 in this case. Okay, wording सुनो क्या होनी चाहिए. Would you agree the resistor will get 12 volts? And I'm sure if you would agree that the resistor gets 12, then in parallel, the voltage remains the same. So is everyone okay if the resistor gets 12 and in parallel, the voltage remains the same? So the bulb must also get 12. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई. 12 का रिजल्ट तो आ गया. अब जो आप लोग मुझे 0 का पूछ रहे थे, so मैं इसी डायग्राम को मैनिपुलेट करता हूं. So यार, don't you think अगर मैं इस बल्ब को A के साथ कनेक्ट कर दूं, पहले मैं A के साथ कनेक्ट नहीं करता हूं, पहले मैं मिड पॉइंट के साथ कनेक्ट करता हूं, शायद आपको ज्यादा अच्छा लगेगा. तो would you agree that in this case the bulb is connected with half the resistor? In this case, the bulb is connected with half the resistor. So if the entire resistor was getting 12 volts, half of it should get 6. Fair enough? Half of the resistor should get 6. Consequently, the bulb must also get 6. मेरा ख्याल है यहां तक भी आप ओके होंगे कि मैंने इसको आधे के साथ कनेक्ट किया है. So if the entire resistor was getting 12, half of the resistor should get 6, and in parallel it is remain same. So the bulb must also get 6. तो 6 तक आप लोग ओके हैं? तो मेरा ख्याल है अगर आप 6 तक ओके हैं तो फिर लेट मी फर्दर चेंज दिस. नाउ व्हाट इफ द bulb is connected to only 1/4 of the resistor? So will you guys be okay if the bulb is connected to 1/4 of the resistor? That portion of the resistor gets 3 volts, so the bulb will also get 3. तो अगर आप यहां तक मेरा ख्याल है ओके हैं तो फिर फाइनली, don't you think when I go to the other extreme end where the sliding contact was placed right at the tip of the resistor, then the voltage should continue reducing until it eventually becomes 0. Fair enough? तो हानिया ने पूछा था और आई थिंक किसी और ने पूछा था, हुसैन ने पूछा था, हानिया ने पूछा था और रूहुल्ला ने पूछा था. जरा तीनों मुझे ओके करते जाओगे? ठीक है, हानिया का आ गया, हुसैन भाई का आ गया, रूहुल्ला भाई गॉट इट, सही है. फेयर इनफ. सो यार ये डायग्राम तो मिटा देता हूँ. अच्छा, इसको लर्न करने का तरीका होता है, और देखो इसको लर्न करने का आई बिलीव सबसे इजीएस्ट तरीका ये होता है, एटलीस्ट मैं तो इस तरह से लर्न करता हूँ. ऑल दिस इज अ फिक्स्ड एंड, एंड देन रिमेंबर माय स्टेटमेंट. So my statement is, when the sliding contact is furthest away from the fixed end, when the sliding contact is furthest away from the fixed end, you will get maximum voltage. See if that makes sense. So learn kar lijiyega. When the sliding contact is furthest away from the fixed end, the bulb gets maximum voltage. So that is one way of looking at it. And then the other extreme statement should be, when the sliding contact is closest to the fixed end, the bulb gets 0 voltage. Okay, so अगर इस तरह से learn करोगे तो convenient हो जाएगा कि when the sliding contact is furthest away from the fixed end, the bulb gets maximum voltage. Yes, Hussain, your statement is correct. So when the sliding contact is furthest away from the fixed end, the bulb gets maximum voltage. And when the sliding contact is closest to the fixed end, the bulb gets 0 voltage. So I believe इस तरह से learn करना is another way. शायद
स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है याद करना, बट फॉर द टाइम बीइंग तो मैं इसको बस बीच में बना देता हूँ. सो कमिंग बैक टू माय स्टेटमेंट, सो आफ्टर मेकिंग यू डू द कैलकुलेशन, मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था, ये जरा चेक कर लेना कि both circuits can be used to adjust the brightness of the bulb. However, a potential divider circuit has a natural preference, and that is because it provides a wider range of current. So using a potential divider circuit, आप बल्ब को ब्राइट भी कर सकते हो, डिम भी कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर आप वेरिएबल रेजिस्टर को देखोगे और उसकी रेंज को ऑब्जर्व करोगे, दोनों की रेंज को कंपेयर कर लो, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस व्हेन आई सेड कि a potential divider circuit allows a much larger range of operation with regards to the flow of current. सही, तो एक ये वाली वर्किंग बच गई थी. अच्छा, अब जो नेक्स्ट वाली वर्किंग करनी है इसी पेज पे करा देता हूं. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर, कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टर, स्मॉल आर, वोल्टेज, कैपिटल वी, पोटेंशियल ड्रॉप, जरा सिंबल्स सबके देखते जाना, स्मॉल वी, एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. तो ये 5 टर्म्स का मतलब क्या होता है, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, इनको डायग्राम पे कैसे शो करते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है. सही, जरा पांचों टर्म्स पहले एक नजर देख लो, ताकि जब मैं स्क्रॉल डाउन कर जाऊं ना तो मुझे वापस ऊपर ना आना पड़े. द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, वोल्टेज कैपिटल वी, पोटेंशियल ड्रॉप स्मॉल वी, एंड EMF E. So before I start with the terminologies ना, पहले मैं डेफिनेशंस कर दूं, तो एटलीस्ट इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेता हूं. एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल आर, मैं पांचों की डेफिनेशंस लिख दूंगा, पहले 2 टर्म्स की लिख दूं. refers to any component slash appliance connected in the circuit. So any component, any appliance connected in the circuit in general terms is referred to as an external resistor. This can be a fan, this can be a bulb, this can be a heater, and so on and so forth. दूसरी चीज, internal resistance. So this is small r, refers to the resistance offered by the chemicals inside the battery to the flow of current. In simple terms, internal resistance is the resistance of the battery. Now, why does the battery offers resistance? तो कोई शौक नहीं होता बैटरी को, कोई प्लेजर नहीं मिलता उसको रेजिस्टेंस ऑफर करने का. अनफॉर्चुनेटली उसकी प्रॉब्लम ये होती है, इट इज द रेजिस्टेंस which is offered by the chemicals which are made
which are used in the making up of a battery. So hence the term internal resistance refers to the resistance offered by the chemicals inside the battery. तो पहले जरा इन दोनों टर्म्स को देख लेते हैं कि हम डायग्राम पे इनको कैसे शो करते हैं. ना आपके जो प्रीवियस पेपर्स हुआ करते थे ना, अगर आप 5-10 years पहले चले जाओगे तो प्रीवियस पेपर्स के अंदर व्हाट एग्जामिनर्स यूज्ड टू डू इज कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के अंदर बना के दिखाते थे, which was actually a very sensible way. तो पुराने वाले पेपर्स के अंदर they used to draw the terminals of the battery and they used to draw a box, label it as small r inside the battery. So this is how they used to show the internal resistance, and the external resistance was simply labeled as capital R and was shown outside the battery as I'm doing right now. So older papers may, older version may, you will see these diagrams quite a lot. Recent papers may, इन्होंने थोड़ा सा डायग्राम को काइंड ऑफ मैनिपुलेट कर दिया है. So, अब वो ये करते हैं कि वो बैटरी अलग से बनाते हैं, बैटरी के बिल्कुल करीब में एक बॉक्स बना देते हैं, right besides the battery. So technically not inside the battery as it should have been, but besides the battery. उसको small r कर देते हैं, and just so that the student knows that this is the internal resistor, वो पूरे के अराउंड एक डॉटेड लाइन से बॉक्स बना देते हैं. दिस इज द कन्वेंशन दैट दे आर यूजिंग इन द रीसेंट पेपर्स. एंड एज फार एज द एक्सटर्नल रेजिस्टर इज कंसर्न्ड, वो तो आपको एज यूजुअल बाहर बना हुआ मिल जाता है. सो वैसे दोनों डायग्राम्स इक्वली करेक्ट हैं, बट रीसेंट पेपर्स के अंदर दे काइंड ऑफ यूज द सेकेंड डायग्राम मोर ओकेजनली एज कंपेयर टू द फर्स्ट वन. नाउ मैंने बाकी चीजों की डेफिनेशंस अभी नहीं लिखी हैं. So as an example, what I'll do is कि मैं आपको कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करता हूँ, और जो ऊपर 3 टर्म्स बच गए हैं ना, पहले कैलकुलेशन करवा दूं, इसके बाद उन तीनों टर्म्स की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेता हूँ. I'll use the recent वाला फॉर्मुलेशन. जरा चेक कर लीजिएगा, मैं कुछ नंबर्स देता जा रहा हूँ आपको. So this is 1 ohm denoted as small r. मैं कैलकुलेशन कराने के बाद जो ऊपर के 3 टर्म्स बच गए थे ना, उनका मतलब भी समझा देता हूँ, फॉर्मूला भी करा देता हूँ, डेफिनेशन भी करा देता हूँ. इस सब कुछ अभी लिख लूंगा. आपकी डॉटेड लाइन आ गई. थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूँ सो आई गेट सम स्पेस टू वर्क अराउंड विद थिंग. ये आपका कैपिटल आर आ गया. फेयर इनफ. और बैटरी के साथ 6 लिख देता हूँ. अब एक एक पार्ट को आप जरा केयरफुली सुनते जाइएगा. मैं जो जो पार्ट की क्वेश्चंस पूछता जाऊंगा ना, तो उसकी सारे स्टेटमेंट्स भी साथ साथ लिखता जाऊंगा. इमेजिन इफ आई आस्क यू कि कैपिटल आर को कितना वोल्टेज मिलेगा, या लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई आस्क यू कि आप मुझे करंट कैलकुलेट करके दो. सबसे पहला पार्ट ये पूछता हूँ, कैलकुलेट द करंट सप्लाइड. So from the looks of the diagram, can you all realize current का result आ जाएगा 6 volts divided by 1 plus 2. So I'm sure you would agree that the value of the current supplied by the battery in this case turns out to be 3 amperes, sorry, 2 amperes. और अगर आपको diagram पे draw करना हो, तो I'll do that for you in a moment. ठीक है? अब कैसे समझाना? What if I ask you external resistor को कितना वोल्टेज मिलेगा? Yes, Ruhulla. Because I wanted to calculate the current supplied by the battery now. So the current supplied by the battery will involve all the resistance, which in this case is 3 ohms.
ओके जी, तो माय क्वेश्चन नाउ इज एक्सटर्नल वाले रेजिस्टर को कितना वोल्टेज मिलेगा? आई एम श्योर यू वुड ऑल एग्री कि एक्सटर्नल वाले रेजिस्टर के लिए कोई भी पूछे ना कितना वोल्टेज मिलेगा, इफ यू जस्ट लुक एट द नंबर्स तो आप स्ट्रेट अवे जज करके बता दोगे यदि एक्सटर्नल रेजिस्टर गेट्स 4 volts, fair enough, this value of voltage for the external resistor 4 volts is given a special name. This is actually called terminal potential difference. Now most of the students O levels के अंदर simply used to refer to this either by the term voltage or by the term potential difference. So in your AS, if you can remember, the best terminology is terminal potential difference. So O levels के अंदर आप इसको voltage बोलते थे या potential difference बोलते थे. इसका proper term है, अगर याद रह सके तो अच्छा है यही वाला term use करना, terminal potential difference. See? Now इसकी definition अभी लिखूंगा. इसको हम denote करते हैं by the symbol of capital V. और इसका फॉर्मूला बन जाता है capital V is equal to I times capital R. ठीक है, सो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं. मैंने करंट कैलकुलेट किया, 2 एम्पेयर्स आ गया. देन माय क्वेश्चन वाज एक्सटर्नल सर्किट को कितना वोल्टेज मिलेगा? तो उसका आंसर हमने कैलकुलेट करके निकाला 4 volts. So this value of 4 volts is given 3 different names. They are all the same. Terminal potential difference is the best term out of all the 3 terms. So this value of 4 volts can either be called terminal potential difference, or it can be called voltage, or it can be called potential difference. अब तीनों नामों का एक ही मतलब है. So please don't go around asking me what is the difference between the 3 names. No difference. तीनों नाम एक ही चीज है. CIs expects you to use the entire term terminal potential difference. However, in O levels, you used to either use the term voltage or potential difference. So ये दोनों नाम गलत नहीं है, लेकिन terminal potential difference ज़्यादा अच्छा नाम है. So it is denoted by the symbol of capital V, and it is given by the formula capital V is equal to I into capital R. ठीक है, तो मोहम्मद हुसैन ने पूछा है what is the difference between voltage and potential difference? So no difference. ठीक है, but out of the 3 terms, try to use the term terminal potential difference as the best among the 3 given terms. Now, my next question. कि हम इसको define कैसे करेंगे? तो voltage लिखो, potential difference लिखो, या best नाम लिखो, terminal potential difference, is defined as, so this is the expected definition. The amount of electrical energy this is what the Cambridge expects you to write, converted into other forms
example light, heat, etc. When a unit charge flows through the external circuit. डेफिनेशन पूछे तो ये लिख दीजिएगा, सिंबल पूछते हैं तो कैपिटल वी लिखिएगा, नाम पूछते हैं तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलिएगा, फॉर्मूला पूछते हैं तो कैपिटल V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R लिखिएगा। ठीक है, डेफिनेशन सिंबल कैपिटल V, नाम पूछते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, फॉर्मूला पूछते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल R। तो ये तो एक चीज हो गई। सो नाउ दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन which is, if I ask you कि स्मॉल r को कितना वोल्टेज मिलेगा, would you agree you have the current, you have the resistance, so I'm presuming कि अगर आप current और resistance को multiply करोगे तो you should be able to tell me कि स्मॉल वाले r को कितना वोल्टेज मिलेगा। तो I have the current as 2, I have the resistance as 1, multiply करेंगे तो you will get 2 volts. This value of 2 volts, which is the voltage for the internal resistor, इसका स्पेशल नाम रखा जाता है लॉस्ट वोल्ट्स। काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर व्हाई डू वी कॉल इट एज लॉस्ट वोल्ट्स। या लॉस्ट इसलिए बिकॉज वी कैन नॉट यूज इट, ये जाया हो जाता है। ठीक है, इस ये प्रैक्टिकली किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये वेस्ट हो जाता है, हेंस द टर्म लॉस्ट वोल्ट्स। सो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करने का सिंबल स्मॉल v, सो दैट वाज कैपिटल V, दिस इज स्मॉल v। इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला स्मॉल v इज इक्वल टू I इंटू स्मॉल r। इसकी डेफिनेशन, तो मेरे भाई इसकी डेफिनेशन बनेगी तो एक एक करके सारे टर्म्स की डेफिनेशन आ जाएगी। तो पहले मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिखी थी, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी, अब लॉस्ट वोल्ट्स की लिख रहा हूं। इज डिफाइंड एज द एनर्जी dissipated or lost in the form of heat when a unit charge flows through the internal resistance slash internal circuit। ठीक है, सो लॉस्ट वोल्ट्स का नाम इसलिए because this is that amount of energy which cannot be used by us for any practical purposes, तो ये वेस्ट हो जाती है। Unfortunately Hania is right, so Hania is right, unfortunately small v is also for drift velocity,
है ना, जस्ट लाइक कैपिटल P इज फॉर पावर एंड कैपिटल P इज फॉर प्रेशर एज वेल. सो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लैंग्वेज में जितने अल्फाबेट्स हैं कहीं ना कहीं जाके रेपिटेशन तो होती है ना. सो पावर और प्रेशर में भी रेपिटेशन होती है. अच्छा, रो के साथ भी यही होता है. डेंसिटी इज ऑल्सो रो एंड रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो रो. सो बिल्कुल वैसे ही अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट वोल्ट्स इज ऑल्सो स्मॉल v एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज हानिया पॉइंटेड आउट इज ऑल्सो स्मॉल v. तो कुछ कर नहीं सकते इसके लिए. अब हमारा आखिरी टर्म बच गया. अगर मैं टॉप पे जाऊं, हमने सारे के सारे टर्म्स को एक एक करके डिस्कस कर लिया ना. आखिरी टर्म बच गया है. सो ये हो गया, ये भी हो गया, वोल्टेज भी हो गया, है ना. अब वोल्टेज के लिए याद रखना है कि तीन नाम है. वोल्टेज भी ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस भी ठीक है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बेस्ट है. ठीक है. फिर पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सही है, और लॉस्ट वोल्ट्स बेस्ट है. सही. तो अगर आप चाहते हैं तो मैं दोनों नाम लिख देता हूँ. लॉस्ट वोल्ट्स भी लिख लेता हूँ और पोटेंशियल ड्रॉप भी लिख लेता हूँ. तो ये दोनों नाम है लेकिन लॉस्ट वोल्ट्स प्रेफर्ड है. अब आखिरी टर्म बच गया विच इज ईएमएफ. ठीक है. तब ईएमएफ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगर आपको खुद अंडरस्टैंड करना है ना कि व्हाट इज ईएमएफ, केयरफुली देखिएगा. द सम ऑफ कैपिटल V 4 volts and small v 2 volts. The sum of capital V 4 volts and small v 2 volts. इनका जो सम बनता है which is 6 volts, that is your EMF. तो काफी लोग लिटरली इसी तरह लर्न करते हैं. सम ऑफ कैपिटल V and small v. So 4 volts and 2 volts, that adds up to give you a total of 6. So that is your EMF. But that is not the definition. But याद रखने के लिए ठीक है. सो ये लिखना सही नहीं होगा, ऑल्दो अंडरस्टैंड करने के लिए बेस्ट है कि ईएमएफ इज द सम ऑफ कैपिटल V एंड स्मॉल v. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सही है. बेसिकली द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V and the lost volts small v adds up to give you the EMF of the battery. But as I said, in terms of definition, it is expected कि आपको वर्डिंग इस तरह से लिखनी चाहिए. तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला बना लेते हैं. इट इज, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, बिफोर आई राइट डाउन द डेफिनेशन ना, मैं सबके फॉर्मूलाज इसकी डेफिनेशन के साथ साथ लिखता जा रहा हूँ. तो ये रिजल्ट था, ये रिजल्ट था, और अब मैं इसकी वर्डिंग लिख के इसके साथ भी फॉर्मूला लिख लूंगा. इट इज डिफाइंड एज, तो प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है, द अमाउंट ऑफ केमिकल एनर्जी converted into electrical forms when a unit charge flows through a complete circuit
that is the internal and external circuit. और अगर इसके साथ भी फॉर्मूला आपको लिखना हो सो ये बन जाएगा अब काफी सारे स्टूडेंट्स को ये सारे के सारे फॉर्मूलाज लिखना सही लगता है तो इफ आई आस्क यू ना कि ईएमएफ के लिए आप फॉर्मूलाज को किस किस फॉर्म में लिख सकते हैं मेरा ख्याल है यू वुड आल्सो अप्रिशिएट there are at least 5 different ways in which the formula of EMF can actually be written. All of them are correct और जो आपको सूट करे वो आपकी अपनी चॉइस है फर्स्ट वाला सबसे कन्वीनियंट है कैपिटल V प्लस स्मॉल v अंडरस्टैंड करने के लिए द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस द लॉस्ट वोल्ट्स एड्स अप टू गिव यू द EMF फिर अगर आप इसको ब्रेक करके लिखना चाहो तो दिस इज वन वे ऑफ राइटिंग इट डाउन अब ये आपकी चॉइस है कौन सा आपको सही लगता है दिस इज द अदर वे ऑफ राइटिंग इट डाउन एंड द फाइनल वे ऑफ राइटिंग डाउन आपको कौन सा सूट करता है ना आपकी मर्जी है बट ये सारे सेम है ठीक है सो ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली मुझे वैसे फॉर्मूला नंबर 2 ज्यादा कन्वीनियंट लगता है लिखते हुए बट इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है नॉर्मली students end up just remembering one formula and then they try to rearrange according to the situation मुझे जरा 2 वाला कन्वीनियंट लगता है सो मैं ज्यादातर केसेस के अंदर 2 यूज करूंगा लेकिन अगर आपको फर्स्ट रिजल्ट याद रखना है ना बस फर्स्ट वाला याद रख लीजिएगा और उसकी बेसिस पे आप बाकी सारे आंसर्स निकाल लोगे ठीक है ना द रीजन आई एम यूजिंग फॉर्मूला नंबर 2 is simply because if the examiner asks you to plot a graph of capital V on the y-axis क्योंकि ये ग्राफ अक्सर पूछते हैं इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए फॉर्मूला नंबर 2 कन्वीनियंट ज्यादा होता है दैट वाज द ओनली रीजन आई सेड कि मुझे सेकंड वाला यूज करते हुए जरा ज्यादा आसान लगता है if the question asks you to plot a graph of capital V on the y-axis against I on the x-axis so if I start with formula number 2 which is this result and if you allow me to rearrange the formula so let's see what will I get मैं rearrange कर रहा हूँ आप जरा check कर लें do recognize कि मैंने इसको अपने हिसाब से इस तरह से rearrange किया है so that it allows me to plot capital V on the y-axis as the question wants me to. And it also allows me to plot I on the x-axis as the question demands. तो मैंने फॉर्मूले को अपनी मर्जी के हिसाब से rearrange किया है so that I can construct capital V on the y-axis and capital I on the x-axis. So let's see what kind of graph will I get. मेरा ख्याल है कंपेयर करके आप जज तो कर सकते हैं ना कि we should expect to get a straight line graph because the equation is compatible with y is equal to mx plus c. So we should be getting a straight line graph.
with a negative gradient and a positive y-intercept. मैं एरोस बना देता हूं, मेरा ख्याल है आप अग्री करोगे. नेगेटिव ग्रेडियंट एंड अ पॉजिटिव y-intercept. अगर मैं ग्राफ बनाऊं ना इसका, तो देखें ये शेप आना चाहिए. So capital V against I, since we are supposed to get a straight line graph with a negative gradient and a positive y-intercept, ये शेप बन जाएगा. हुसैन ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है. हुसैन ने पूछा है कि एक ओम्स लॉ भी तो होता है with V and I. So how do we know which graph to draw? So good question, Hussain. जब Ohm's law होगा ना, so they'll be very particular. They will not use the term EMF. ठीक है, तो क्वेश्चन में दूर दूर तक EMF के बारे में कोई बात नहीं हो रही होगी if they want you to plot the graph of Ohm's law. सही. सो जब भी क्वेश्चन के अंदर EMF के बारे में कोई बात नहीं होगी, then that means कि they want you to construct the Ohm's law वाला graph. तो judgment फॉरवर्ड हो जाएगी. अच्छा, now on this graph you should be able to recognize two things. मेरा ख्याल है आप भी appreciate करोगे कि the y-intercept should give you the EMF and the gradient should correspond with minus R. ठीक है, so you can remember it this way. Okay, the y-intercept of the graph gives you the EMF and the gradient of the graph corresponds to the internal resistance. So, in terms of a question, अगर आपको कोई इस तरह का scenario given हो, where the examiner gives you the graph, और suppose करें कि एक इस तरह का graph given है, और मैं कुछ numbers भी दे देता हूँ. स्ट्रेट लाइन है ना, तो बस दो वैल्यूज दे देता हूँ, काफी है. y एक्सिस के ऊपर 4 गिवन है, x एक्सिस पे 2 गिवन है. तो बस अगर मैं आपको दो वैल्यूज दे दूं ना, एंड इफ आई आस्क यू कैलकुलेट, डायरेक्ट आंसर्स दे देना. द ईएमएफ ऑफ द ग्राफ, सेकंड पार्ट के अंदर कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर थर्ड पार्ट के अंदर स्केच अ न्यू ग्राफ वेयर EMF reduces to half and internal resistance gets doubled. है ना. सब लोगों ने मुझे, हानिया ने कम से कम EMF का आंसर तो सही दिया है. दैट इज 4. अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए काफी लोग पूरी कैलकुलेशन करते हैं, एंड आई एम नॉट दैट keen on doing the entire calculation. जिनको पूरी कैलकुलेशन करनी है ना, जरा चेक कीजिएगा. सो ग्रेडियंट इज इक्वल टू माइनस आर. ठीक है, तो हारिस ने पूछा हाउ कैन द रेजिस्टेंस बी नेगेटिव. इट विल नॉट बी नेगेटिव. ग्रेडियंट कैलकुलेट करो हारिस, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. तो काफी लोग पूरी कैलकुलेशन करते हैं. अगर आप भी चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा, मुझे तो ये बिल्कुल भी सूट नहीं करती.
तो हारिस को पहले मैं आंसर दे दूं। देखो हारिस, माइनस का कोई इशू नहीं है। आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। द नेगेटिव साइन विल एक्चुअली गेट कैंसिल्ड फ्रॉम बोथ द साइड। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। अब द रीजन व्हाई दिस वर्किंग इज कंप्लीटली यूजलेस एज फार एज आई एम कंसर्न, ऑल्दो करना हो तो कर लेना, कोई इशू नहीं है। मेरा तो ख्याल है कि अगर आप सिर्फ इस तरह याद रख लो, राइज ओवर रन, तो हमेशा करेक्ट आंसर आ जाएगा। और मेरा ख्याल है आप अग्री करेंगे। मुझे तो कन्वीनियंट यही लगता है। सो आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करना हो तो मैंने क्रॉस कर दिया है, मैं मिटाऊंगा नहीं। लेकिन अगर आपको करना हो तो कर, मैं मेरा ख्याल है मिटा ही देता हूँ। तो आपको करना हो तो कीजिएगा। मेरा ख्याल है राइज अपॉन रन से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो राइज इज 4, रन इज 2, नो नेगेटिव नथिंग, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आ रहा है। सो दैट वे यू डोंट इवन हैव टू वरी अबाउट द माइनस साइन एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, राइज अपॉन रन से 2। इसी तरह कर लीजिएगा, बेहतर है। फिर भी अगर आपको सूट करता है ग्रेडियंट की पूरी वर्किंग करना तो माइट एज वेल कर लीजिएगा। नाउ माय थर्ड वाली वर्डिंग्स, एनी सजेशंस वेयर इट सेज sketch the new graph, ये मैंने मिटा दिया because I'm not that keen in making you do the calculation of the gradient. Sketch a new graph where EMF आधा हो गया है और इंटरनल रेजिस्टेंस डबल हो गई है। सो कोई सजेशन देगा नया ग्राफ कैसे बनना चाहिए है, तो फिर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। हाँ, हानिया का मैं यही आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं स्टीपर ग्राफ, सही है, एंड अ स्मॉलर वाई इंटरसेप्ट, फेयर इनफ। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी मुझे। हारिस ने आधा आंसर सही दिया है। ईएमएफ की वैल्यू 2 हो जाएगी, फेयर इनफ। तो वाई इंटरसेप्ट तो सही बता रहे हैं। हानिया ने भी ये लिखा था। फिर हानिया ने लिखा था लाइन विल बी स्टीपर, मुझे इसमें भी कोई एतराज नहीं है। बट कैन एनीबडी टेल मी व्हिच पॉइंट एंड द ऑन द एक्स इंटरसेप्ट शुड आई मार्क? तुक्का नहीं है, रीजन के साथ। ओके, सब लोग कह रहे हैं 1 मार्क करें करंट के लिए। तो यार 1 मार्क करूंगा तो हाउ विल द लाइन बी स्टीपर? ये तो पैरेलल बन जाएगी। अगर आपको 1 सही लगता है ना तो मैंने मार्क कर दिया, ये तो स्टीपर तो नहीं हुई। इनफैक्ट राइज अपॉन रन कीजिएगा, आंसर तो 2 आएगा। तो ये तो गलत है, बिकॉज आई वांट द वैल्यू टू बी डबल ना। डबल तो किया ही नहीं आपने। जी, शायान और बाकी लोगों ने अब सही आंसर दिया है। सो 1 नहीं हो सकता, 0.5 मेक्स अ लॉट मोर सेंस। एंड ट्राई गोइंग विद 0.5। आप भी अग्री करोगे 0.5 इज अ बेटर ऑप्शन। ठीक है, सो ये सानिया स्टीपर होगा, बिल्कुल सही है। एंड अ स्मॉलर वाई इंटरसेप्ट, ये भी सही है। बट कितना स्मॉलर वाई इंटरसेप्ट और कितना स्टीपर, ये आपको जजमेंट होनी चाहिए। अब अगर आप चेक करना चाहते हो ना कि न्यू वैल्यू ऑफ आर कितनी बनेगी, आई गेस दिस मेक्स मच मोर सेंस। अप्लाई द राइज ओवर रन वाली वर्किंग। सॉरी यार, rise upon run, so you'll get 4 ohms. This is more sensible now because you wanted the value to get doubled. So previously it was 2, now it becomes 4. So ये वाला ग्राफ सही है। ओके, फर्दर आगे नेक्स्ट चीज इसी के साथ साथ, तो ये सेकंड एग्जांपल बता रहा हूँ। सो इमेजिन अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से गिवन हो, अगेन देयर इज अ बैटरी गिवन टू यू, इसका ईएमएफ इज नॉट प्रोवाइडेड, then there is this internal resistance given to you, also not provided. And just so that you remember, the dotted line is also given to you.
Then you have an external resistor, but this time the external resistor is a variable resistor. Let me call this as VR for variable resistor. Okay, then the question also says we have positioned an ammeter in the circuit and we have positioned a voltmeter as well. Okay, if I ask you, what will the voltmeter measure? तो फजूल सा आंसर ऑल्दो करेक्ट तो होगा, दैट विल बी क्या बोलो वोल्टेज, और बेहतर आंसर होगा कि द वोल्टमीटर विल मेजर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अगर याद रह सके तो ट्राई यूजिंग द एंटायर टर्म, भूल जाओ तो खैर है। नाउ द क्वेश्चन सेज व्हेन वेरिएबल रेजिस्टर, क्वेश्चन की वर्डिंग राइट हैंड साइड पे लिख रहा हूं, पहले इत्मीनान से देख लो। व्हेन वेरिएबल रेजिस्टर इज सेट एट R1, comma, voltmeter reads 1 volt and ammeter reads 0.25 amperes। ठीक है, दिस इज वन इंफॉर्मेशन। आगे लिखा है when, same question continues, variable resistor is set at R2, comma, voltmeter reads 0.9 volts and ammeter reads 0.3 amperes। Yes, this is the entire set of information given to you, and the question is asking you चार चीजें कैलकुलेट करनी है। R1 कैलकुलेट करना है, R2 कैलकुलेट करना है, EMF कैलकुलेट करना है, स्मॉल r कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब अगर आप मुझे अलाउ करें ताकि मैं डायग्राम को थोड़ा खराब कर सकूं, तो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन मैं जितनी चीजें लिखता जा रहा हूँ ना वो सब मिटा दूंगा फिर, और फिर क्वेश्चन को ओरिजिनल फॉर्म में वापस ले आऊंगा। द क्वेश्चन सेज जब आपने इसको R1 पे सेट किया है तो द वोल्ट मीटर इज रीडिंग 1 वोल्ट, द एमीटर इज रीडिंग 0.25 एम्पेयर। Let's only pay attention towards these numbers. So wouldn't you agree if I apply the formula I should be able to directly get the answer? So मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखता हूँ, मेरा ख्याल है आप सब लोग मेंटली कैलकुलेट करके आंसर निकाल चुके हो, सो व्हाई बॉदर। तो फर्स्ट पार्ट में मेरा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इरेज कर रहा हूँ, अब सेकंड वाली इंफॉर्मेशन लिख रहा हूँ। व्हेन सेट एट R2, voltmeter reads 0.9, ammeter reads 0.3। सो ये भी हो जाएगा, ये तो डायरेक्ट आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूँ।
और क्वेश्चन को इसके ओरिजिनल वाले फॉर्म पे वापस ले आता हूँ। ठीक है, आई डोंट नीड टू इन्वॉल्व मेनी नंबर्स ओवर हियर, यू कैन जस्ट पुट द वर्किंग एंड देन डिसाइड अकॉर्डिंगली। अब मैंने ऊपर आपको ईएमएफ कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूलाज लिख के दिए थे। अब आपको कौन सा अच्छा लगता है वो आपकी चॉइस है। मैंने आपको बता दिया था कि मेरी प्रेफरेंस कौन सी है, तो यू मे यूज सम अदर फॉर्मूला इफ यू लाइक। मैंने वही लिखा है जो मुझे सही लगता है। सो जो नंबर्स अवेलेबल है ना, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप जरा देख लें। आई हैव द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट एंड आई हैव द करंट 0.25। So if I plug in the number जिसको मैंने हाईलाइट किया है, I get my first simultaneous equation. Terminal potential difference 1, current 0.25. So this becomes my first equation. And likewise, if I highlight the next line, I should be able to get my second simultaneous equation. चेक कर लीजिएगा। और मीनवाइल किसी के पास कैलकुलेटर हो तो जरा कैलकुलेट करके आंसर भी निकाल लो। कुछ आ जाए तो बता दीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वाले पेज पे शिफ्ट करूं। हाँ यार, जरा देखो किसी का रिजल्ट अगर आ रहा हो तो। कुछ आ जाए ना तो जरा प्लीज बता दीजिए, और फिर इसकी वर्किंग को आगे कंटिन्यू करते हैं। जी बिल्कुल सही है। स्मॉल आर का आंसर आई बिलीव 2 ओम्स आ रहा है। ईएमएफ का आंसर बिल्कुल ठीक है, 1.5 आर। ओके, पेज को चेंज कर रहा हूँ, नेक्स्ट वाली स्लाइड पे मूव कर रहा हूँ। नाउ वन क्वेश्चन व्हिच मेनी स्टूडेंट्स एंड अप आस्किंग। एक सेकेंड ना, ये पेज रिफ्रेश हो जाए फिर स्टार्ट करूँ। ओके, तो one question which many students end up asking is, okay, how can we determine whether or not a battery has internal resistance? And how can we calculate its value? उसका बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपके घर में कोई बैटरी हो ना, तो ये काम करके देख लेना। 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे। ऑल यू नीड इज अ you need an ammeter and a voltmeter and a bulb. So you know, सबसे सिंपल तरीका, अगर आपके पास एक बैटरी है ना, कोई भी बैटरी है, पहला काम ये कीजिएगा, don't connect the battery to the circuit. Just take a battery and simply connect a voltmeter across it. So don't connect it to a circuit. Just buy a battery from a shop, bring it at home, just connect the voltmeter across the battery and see what the value is recorded by the voltmeter.
लेट्स सपोज मैं कोई आर्बिट्री नंबर्स दे देता हूँ समझाने के लिए. लेट्स सपोज इट रिकॉर्ड्स 9 volts. Just for the sake of argument, let's suppose it records 9 volts. This value is your EMF. So EMF अगर निकालना हो, no need to connect a circuit. Just take a battery, connect a voltmeter across it, and the number that you get will always give you the EMF. Next step. Now connect any appliance with your battery. That appliance can be a bulb or a fan or a heater or whatever. Imagine bulb आपके पास पड़ा हुआ है छोटा सा, आपने लाके इस बैटरी के साथ बल्ब लगा दिया. Now connect the same voltmeter across the bulb and note down its reading once again. More often than not, I don't quite know कितना read करेगा, but it will be a lesser value. For example, पहले अगर 9 थी ना, अब आपके पास for example 8 आ जाएगी. So this value of 8 will be termed as your terminal potential difference. मतलब है 9 minus 8, this 1 volt becomes your lost volts, and presence of lost volts confirms presence of internal resistance. ठीक है, तो किसी भी बैटरी कोई के अगर आपको चेक करना है ना कि इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है, बहुत आराम से चेक कर सकते हैं. जस्ट नोट डाउन द ईएमएफ by connecting the voltmeter directly with the cell. Imagine you end up getting 9. 9 मैंने ऐसे ही समझाने के लिए दे दिया. Then connect your battery to a circuit and note down the terminal potential difference. More often than not, you will get a slightly lesser number. जैसे पहले 9 था ना, तो अब अगर 8 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, या 8.5 होगा, समथिंग लाइक दिस. तो गेटिंग अ स्मॉलर नंबर does tell us कि 9 minus 8, the so-called 1 volt represents the lost volts, and this kind of confirms the presence of internal resistance. है ना? तो ऐसे आपको जजमेंट हो सकती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है. तो चलिए, पता तो चल गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस है. अच्छा, आइडियल बैटरी कौन सी होगी? ऑल्दो शायद बहुत मुश्किल है, इसीलिए मैंने आइडियल बोला है. आइडियल बैटरी वो होगी जिसमें आपकी ये वाली रीडिंग 9 आ जाए. See, so hence the term ideal, because then this would mean that there is literally no lost volts. So terminal potential difference ideally should be equal to the EMF, but जाहिर ऐसा होता नहीं है, इसीलिए मैंने आइडियल का टर्म इस्तेमाल किया था. तो मैं लिख दूं just as a statement, if the terminal potential difference is approximately equal to the EMF, then this would mean that the lost volts is practically zero, and this would mean that the internal resistance is negligible. हाँ, भेज देना मुझे. नहीं, आई स्टिल डोंट यूज इट, तुम्हें व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा रूल्ला.
All right. Um, so जो आगे की वर्किंग अब डिस्कस करनी है ना, आफ्टर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ internal resistance, external resistance, lost volts, terminal potential difference, and EMF. So इसके बाद की जो वर्किंग है, that is how to charge an uncharged battery using a power source. सही है. So किसी बैटरी की चार्जिंग कैसे करते हैं, उसकी वर्किंग. So before I move on to this working, I'm sure इसकी practical applications आप सबने notice की हुई है. So for all the females, I think ये practical application सबसे convenient होती है कि आप power bank connect करते हो with your mobile phones. इसमें ये काम हो रहा होता है. So I think girls can relate to this. Uh, the reason I'm saying कि girls can relate to this is because second वाला example वो है जो लड़कियों ने जनरली ट्राई नहीं किया हुआ होता, बट लड़कों को पता होता है. सो बिकॉज जब गाड़ी खराब हो जाती है तो बेचारे लड़के ही uh, सारी मेहनत कर रहे होते हैं. सो दे कैन रिलेट टू द सेकंड स्टेटमेंट, जंप स्टार्टिंग अ कार. तो सिंपल टर्म्स के अंदर दीज आर द टू प्रैक्टिकल, मैंने अप्लायंसेस गलती से लिख दिया, आई शुड हैव रादर रिटन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. ठीक है, तो पहले जरा मेन वर्डिंग पढ़ लो. हाउ टू चार्ज एन अनचार्ज बैटरी. तो एक बैटरी आपकी वीक हो गई है. Think of a mobile phone or think of the car battery, and you are trying to charge that uncharged battery. So how does the circuit work? See, so power bank does the same thing, and when you try to jump start a car, उसमें भी यही होता है. First of all, how does the circuit look like? So the power source, इसको मैंने रेड कलर से बना दिया है. So the power source for my case, मैं assume कर रहा हूँ 20 volts का है, and the internal resistance, the smaller the better. So hence 0.1 and a dotted line around it. ठीक है. Then the connecting wires, मैंने जानबूझ के इतना डार्क करके बनाया है. Sometimes the connecting wires also have some resistance. So मैं assume कर लेता हूँ कि the connecting wires have a resistance of, usually they do 3.4 ohms.
ये आपके कनेक्टिंग वायर्स हो गए जो ब्लैक कलर से नजर आ रहे हैं. And then finally comes in the battery that needs to be charged. अगर आपको पूरा पूरा लिखना कन्वीनियंट ना लगे तो आई थिंक इसके लिए एक सेंसिबल ऑप्शन ये होता है कि आप रेड वाली और ग्रीन वाली बैटरी का नाम रख सकते हैं. लेट मी जस्ट कंप्लीट द डायग्राम और मैं इसकी नेमिंग आपको सजेस्ट कर देता हूँ. तब तक ये देख लो कि सर्किट को कनेक्ट कैसे किया हुआ है. As far as the naming is concerned, normally students end up using these terms, and if that suits you, go ahead and use it. So they refer to this as the primary cell. That's the power source. और जिस बैटरी को चार्ज करना है ना, they generally refer to that as a secondary cell. अब सबसे पहले is that a constant value? हानिया ने पूछा है. यार मैं समझा नहीं किस वैल्यू का पूछ रही हो कि is that a constant value? For the connecting wires, depend करता है हानिया के connecting wires की length कितनी है. The longer the length, the more the resistance. है ना. सो मैंने बस एक नंबर एज्यूम कर लिया है 3.4, बट श्योरली अगर लॉन्गर लेंथ होगा ना सो फिर ज्यादा भी हो सकती है. अच्छा, अब सबसे पहले इस बात को चेक करो कि हमने सेल्स को आपस में कैसे कनेक्ट किया है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो द सेकेंडरी बैटरी, द सेकेंडरी सेल रादर, जरा टर्मिनल्स को कंपेयर करो. सो यू नो चार्जिंग करनी हो ना, जब भी चार्जिंग करनी हो तो हमेशा ये होता है प्लस गोज विद प्लस. ठीक है. काफी स्टूडेंट्स कहते हैं सर ऐसा क्यों ये प्लस गोज विद प्लस. इसका एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है. द रीजन व्हाई फॉर अ चार्जिंग पर्पस वी नीड टू कनेक्ट प्लस विद प्लस इज बिकॉज we want the main battery to drive charge into the secondary battery. So this is what we want. We want the main battery to drive its charge into the secondary battery ताकि secondary वाली बैटरी चार्ज हो सके. ठीक है. तो हमने secondary वाली बैटरी को यूज नहीं करना है, उसके अक्रॉस चार्ज को डेवलप करना है, स्टोर करना है. सो मेन बैटरी फोर्सफुली चार्ज को सेकेंडरी बैटरी के अंदर स्टोर करवाएगी. So for that to happen, positive and positive must be connected with each other ताकि दोनों का competition होगा. So one is 20 and the other one is 12. So 20 of course wins, and that is why the top battery will force charges into the bottom battery. Charging process में जरूरी है positive and positive must both be in line with each other. So if they ever ask you, mark the direction of the charging current. The charging current will always be from the primary cell into the secondary cell. तो मैं बाहर की तरफ से भी एक एरो बना देता हूं और अंदर भी बना दिया है. ठीक है. So remember it this way, that for one battery to charge another battery, the two batteries should be in competition with one another. So it's 20 against 12. And since 20 is stronger, so 20 will force the current into the secondary cell, and that will allow the charging process of the secondary cell to happen. ठीक है. तो प्लस एंड प्लस मस्ट बी कनेक्टेड विद ईच अदर. किसी ने गाड़ी को जंप स्टार्ट किया हो तो उन्होंने ये बात नोटिस की होगी कि हम दोनों गाड़ियों के प्लस प्लस को आपस में कनेक्ट करते हैं और माइनस माइनस को कनेक्ट करते हैं. ठीक है. सो द आइडिया इज we want to force charges into the secondary cell. So for that to happen, the two batteries must be in a competition with each other, 20 against 12. 20 is stronger, so 20 will provide charge, and the 12-volt wali will accumulate the charges. So पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर हाउ एफिशिएंट इज दिस प्रोसेस.
So in order to find out how efficient is this process, let me just label the mustard arrow as charging current. All right. अब मुझे क्या क्या चीजें पूछनी है ना, जरा केयरफुली देखिएगा. फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट द चार्जिंग करंट. अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो पहले जरा नंबर्स प्लीज देख लो. कैन एनीबडी टेल मी व्हाई हैव आई रिटन 20 minus 12 and not 20 plus 12? Why 20 minus 12? ठीक है, why 20 minus 12? क्या लगता है? Because positive and positive are connected with each other. So the two batteries are working against each other, hence 20 minus 12. ठीक है? So that gives us 8. The value on the right hand side turns out to be 4. So the charging current provided by the primary cell amounts to 2 amperes. मैं लिख भी देता हूँ. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई. अब if I were to ask you, calculate the power supplied by the primary cell. ठीक है, तो पावर सप्लाइड के लिए stick with the formula P is equal to IV. So you have the current, you have the voltage. So the main battery is supplying a power of 40 watt. जाहिर है सेकेंडरी वाली बैटरी को सारा का सारा पावर तो नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज कुछ ना कुछ पावर लॉस्ट हो जाएगा. कहाँ लॉस्ट हो जाएगा? सो देयर इज इंटरनल रेजिस्टेंस एज वेल एज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. ये सब पावर कंज्यूम करेंगे. द नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द पावर dissipated in the circuit. So इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगी और इसके अंदर कनेक्टिंग वायर्स की रेजिस्टेंस भी आ जाएगी. तो अगर आपको एक ही स्टेप में करना हो तो आप डायरेक्ट वर्किंग कर लीजिएगा. काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो सिंगल स्टेप में कर देते हैं और आई थिंक यही तरीका सही है. बट व्हेन यू आर टेकिंग द रेजिस्टेंस, मेक श्योर यू टेक all the resistors into consideration. So this should be the result. Current is 2, so 2 square. And for resistance, remember to take all of them. तो आपको टॉप से नजर आ रहा होगा ना. सो 0.1 भी आ जाएगा, 3.4 भी आ जाएगा, 0.5 भी आ जाएगा. तो यार जरा मुझे इसका भी आंसर दे दीजिएगा कि पावर आपके पास वेस्ट कितना हो गया. कीप इन माइंड द प्राइमरी सेल वाज प्रोवाइडिंग 40 एंड नाउ दिस आंसर विल टेल अस कि हमने वेस्ट कितना किया है. सो दिस इज द पावर दैट इज वेस्टेड in overcoming the internal resistance and the resistance of the connecting wires. जरा चेक कीजिएगा यार.
लॉस्ट का अमाउंट कितना आ रहा है? मेरा ख्याल है ये 16 आ जाएगा। तो आई थिंक ये 16 है। हाँ जी, 16 बिल्कुल सही है। विच मीन्स इफ आई वर टू आस्क यू, हाउ एफिशिएंट is the charging process? है ना? So the power provided by the primary cell was 40. उसमें से बेटा 16 का पावर तो वेस्ट हो गया। तो पावर stored by the secondary cell will only be 40 minus 16, that is 24. ठीक है, तो प्रोवाइड आपने 40 किया था, सेकेंडरी बैटरी को मिलता सिर्फ 24 है। सो इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी ये करा के फिर मैं इंक्लूड करता हूँ। 24 is the useful amount, 40 was the total value ना, तो आपका रिजल्ट वर्कआउट करके 60% आ जाएगा। ठीक है, सो दिस प्रोसेस वाज ओनली 0.6 in terms of efficiency or 60%, जो भी आपको ठीक लगता है। And I'm sure you would agree, ये the best we can do is, and I think you will appreciate, हम internal resistance को change नहीं कर सकते। So I believe the best we can do is कि जो connecting wires है ना, we can make sure that these are thicker and shorter wires. है ना? और आई थिंक आप अग्री करोगे ना, थिकर एंड शॉर्टर वायर्स, दैट इज एग्जैक्टली हाउ अ जंपर केबल लुक्स लाइक। आई डोंट नो इफ यू हैव नोटिस्ड और नॉट। जो जंपर केबल होता है ना गाड़ी को जंप स्टार्ट करने के लिए, इट्स अ थिकर शॉर्टर वायर। बहुत छोटे लेंथ के होते हैं और मोटे होते हैं। सो अ थिकर एंड अ शॉर्टर लेंथ reduces the value of the resistance. So power dissipation, बस ऐसे लिख देता हूँ, therefore improves efficiency। और यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ, improves efficiency of the चार्जिंग प्रोसेस। ठीक है यार, आई थिंक प्रैक्टिकल्स के लिए एग्जाम्शन ले लेना मेक सेंस। हानिया, इफ यू हैवंट डन मेनी प्रैक्टिकल्स तो फिर देन गो फॉर एग्जाम्शन। ऑल राइट यार, ठीक है, लेक्चर अपलोड कर दूंगा। तो गाइज यहाँ पर कंक्लूड कर रहा हूँ। थैंक यू गाइज एंड खुदा हाफिज फॉर टुडे। डू प्रैक्टिकल्स improve the grades? No, I don't think, because प्रैक्टिकल की वेटेज बहुत कम होती है। सो बजाय इसके कि आप खराब प्रैक्टिकल करो, अगर अच्छा भी करोगे तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगी ग्रेड के अंदर, और खराब हो गया तो फजूल में ग्रेड खराब हो जाएगा। तो अगर ज्यादा प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं तो फिर एग्जाम्शन ले लेना, आई फील डज मेक सेंस। अच्छा, देख लो अलीजे, इफ यू कैन मैनेज टू चेंज इट तो कर लेना, इफ दे अलाउ यू टू चेंज इट। हाँ, यस दे आर डम, यू राइट। चलो गाइस, यहाँ पर ओवर कर रहा हूँ। ऑल राइट यार, सो खुदा हाफिज बेटा एवरीवन।